Good morning, class. Yesterday we have discussed that what is a hyperbola and its construction. And we are done with first, I guess, three, four questions. After that, we are moving to now question number seventh for hyperbola. In question number seventh, we are given that find the equation of the hyperbola that satisfies the given conditions. Vertices is at plus minus 2 comma 0 and foci is given at प्लस माइनस 3, 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हाइपरबोला होता है वी हैव टू स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट इज इफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज आर conjugate axis. And second, for this one, the first one, the standard form is x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. And in the second one, when the transverse axis is the y-axis and x-axis is the conjugate axis, then the standard form is y square upon a square minus x square upon b square is equals to 1. Now, according to this question, the vertices means the end. These are the vertices. The vertices are the ends of hyperbola, or you can say the turning point of the hyperbola on transverse axis. सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस पे देखना है कि हाइपरबोला ने कहाँ टर्न लिया है, कॉन्जुगेट का तो टच ही नहीं करता है. So these are vertices, these one. And in this one, let me just change the color so that it will be clear. These are the vertices, the red one. These are the vertices. Now, according to this question, it is given that vertices are at plus minus 2 comma 0. This is the x-axis, y-axis. तो अब इसमें गिवन में हमें दिख रहा है बच्चे कि x एक्सिस पे वर्टाइसेस हैं. वर्टाइसेस अगर x एक्सिस पे है तो ये क्या फर्स्ट केस बनेगा? एंड ऑब्वियसली फोकाई भी किधर दी है? ऑन x एक्सिस. फोकाई कहाँ होता है? इट इज ऑल्सो ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस. जैसे ellipse में it lie on the major axis, in the same way in hyperbola it lie on transverse axis. This is F1, this is F2. These two are foci. So for question number 7, the standard form is x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. And vertices, अब क्या होता है? Let me just explain. X axis, y axis. First vertex is second. 2 comma 0, negative 2 comma 0, because it is given in the question only. So the distance from center to vertices is denoted by A. So according to this question, A is 2. A is 2. And foci is given as, let the green one be the foci. First focus 3 comma 0. From center to foci or first focus, the distance is denoted by C. So value of C is 3. Now we have value of A, value of C, but we want to calculate the value of B. So by using the relation that C is equals to under the root A square plus B square. In case of hyperbola, it is A square minus B square. In case of, ellipse, this is for hyperbola. And in case of ellipse, it is C is equals to under the root A square minus B square. Now we are dealing with the hyperbola, so we are selecting this one. So putting the value 3 is equals to under the root 2 square plus b square, and solving it, we will get 3 square is equals to 2 square plus b square, or you can simply write 9 minus 4 is equals to b square, and value of b square is 5. I hope it is clear to you. Now putting the value of a, b in the standard form. So it will become x square upon a square, not a.
So it will become 2 square minus y square upon b square. This is as it is b square. So 5 is equals to 1. Solving the equation, this is the required hyperbola. Now the next, let us take a different one now. Okay, it is question number 10th. The foci are 5 with plus minus sign and 0 is y coordinate and the transverse axis is of length 8. Okay, now first of all, foci lies on x-axis because y is 0, so it lies on x-axis. That means this will be the shape of the hyperbola. X will be the transverse axis and y is the conjugate axis. Now next, these are the vertices. Let it be focus, first and second. Now this distance is given as 5, 5. Coordinate of f1 is 5, comma 0, f2 is negative 5, comma 0, and length of transverse axis. Okay, let us take a different color. Let us take green. Transverse axis का length चाहिए हमें. That means it will be 2a because this is a and this is also a. So whole this part will become 2a. अच्छा यही होता है ना ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ हाफ एंड हाफ दोनों रेड डॉट्स जो मेरे पास है उनके बीच का डिस्टेंस देखना है मुझे दोनों वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस सिमिलरली आपके इलिप्स में था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये इलिप्स था ये वर्टाइसेस था दोनों के बीच के डिस्टेंस ही तो हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस था सिमिलरली इन दिस केस ये जो रेड डॉट्स मैंने अभी ड्रॉ किया है दीज आर वर्टाइसेस और इसके लिए हमें क्या करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है so it will be 2a so we can write length of transverse axis is 2a and that is given as 8 so a is 4 a is 4 and from focus c is given as 5 now again we have a and c so we can find b a square plus b square that will become 5 is equals to under the root 4 square plus b square squaring on both sides 5 square is equals to 4 square plus b square or you can write b square is equals to 5 square minus 4 square that is 25 minus 16 and that is 9. So b square is 9. Putting in the standard form now. It is along x-axis so standard form for this hyperbola is this one. Putting the value of a and b we will get x square upon a square. A square means 4 square and b square here we have 9. So final answer is x square upon 16 minus y square upon 9 is equals to 1. Now in question number 12th, we are given that foci is at plus minus, one is at plus 3 root 5 and second is at negative 3 root 5 and the length of latus rectum. Length 8. Okay, now again, in this question, the foci again lies on x-axis. That means x is the transverse axis. And if x is the transverse axis, then the standard form of this hyperbola is x square minus a square. Sorry, x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. Now we will find a and b and then there will be the answer. Okay, first of all, foci plus minus 3 root 5 comma 0. That means C is 3 root 5. This is our C. Now length of latus rectum.
length of lattice rectum. For hyperbola or for ellipse, formula is same, 2b square upon a. It is given as 8. So from here we can solve it as 8a or b square is equals to 4a. I hope it is clear. Now from these two, we have relationship between C, A and B. Putting the value, C is 3 root 5 under the root A square as it is and value of B square, putting the value. It will become 4A. Now squaring on both sides, it will become 3 root 5 whole square is equals to A square plus 4A. Or after solving, we will get 45 is equals to A square plus 4A. Shifting 45 to the right hand side, A square plus 4A minus 45 is equals to 0. And it is a quadratic equation. Class 10th में हमने किया है quadratic equation को solve. So we will find two values of A, either by middle term split करके or by using discriminant formula. Okay, let me just check. Yeah. So value of A, it will be -9 and 5. यही दो values आएगा because इनका multiplication is -45 and their sum with negative sign is +4. But A क्या कभी negative हो सकता है? Is it possible that A will be negative? No, because A क्या होता है? Length होता है and length can't be negative. So we are rejecting this value. So finally A is 5. When A is 5, putting the value again in this one, so B square is equals to 4A. That means now it is 4 into 5, that is 20. Now we have A now and B. So putting the value in the standard form, it will become x square upon. बच्चे ये प्लीज ध्यान रखना यहाँ पे A की वैल्यू पुट नहीं करना है, A स्क्वायर करना है, बिकॉज B स्क्वायर तो एज इट इज आ गया है, बट हमारे पास A 5 है, A स्क्वायर नहीं. So it will become 5 square minus y square upon 20 is equals to 1. So final answer y square upon 20 is equals to 1. Okay, now one last question. क्वेश्चन नंबर 15th. बच्चे जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है मैं वो ट्राई कर रही हूँ, रिमेनिंग आप कर सकते हो सॉल्व एंड करना भी है. स्टिल इफ यू हैव डाउट देन प्लीज लेट मी नो, वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, now foci is given plus and minus. There are two focus and the hyperbola is passing through 2 comma 3. Okay, firstly foci are on y-axis because x is 0, so it's on y-axis. And focus अगर y-axis पे है, that means y-axis ही हमारा क्या है? Transverse axis है. Okay, now if this is the transverse axis, then the shape of the hyperbola is like this one. This is the x, this is the y. Blue are the vertices. Blue are the vertices, yellow are the focus. F1, F2. And the black, the midpoint of the focus is the center. Now, focus is given as plus root 10 and negative root 10. So C is root 10. C is root 10. So can we write the standard form for this one? Yes. Y square upon, बच्चे ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है? Y एक्सिस है. Y एक्सिस
ट्रांसवर्स बना है तो इसलिए ए उसके लिए काम करेगा। अब एलिप्स में होता है बिगर एंड स्मॉलर टर्म, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसवर्स के लिए ये काम करता है, जैसे उधर मेजर एक्सिस के लिए ये आता है सिमिलरली। सो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, and it is given that the hyperbola is passing through 2 comma 3, so it will it will satisfy the given equation. So it will become 3 square minus a 3 square upon a square 2 square upon b square is equals to 1, and now 9 upon a square minus 4 upon b square is equals to 1. So it will become, let's just take the LCM, 9b square minus 4a square is equals to a square b square. अब बचे हमारे पास एक इक्वेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, एंड वी ऑल्सो हैव सी, एंड वी नो दैट देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी. So can we write, putting the value of C, let it be equation number 1, this one. And in this one, squaring on both sides. So it will become 10 is equals to a square plus b square. Or we can simply write a square is equals to 10 minus b square. Or b square is equals to 10 minus a square. Either. Putting in equation first, either this one or this one. मैं अभी के लिए इसको कर रही हूँ, आप इसको करोगे, that will be the same. It will become 9 in 10 minus a square minus 4a square is equals to a square as it is 10 minus a square. 90 minus 9a square minus 4a square, 10a square minus a raised to power 4. Shifting the terms, so it will become a raised to power 4 minus negative 9, negative 4, and here we have negative 10. It will become negative 23 and 90 will be in positive sign. बच्चे मैंने सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, बोथ द टर्म्स. अब आपको लगेगा ये इक्वेशन तो पावर 4 में है. नो, ये इक्वेशन अभी ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है. ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 ए स्क्वायर. अगर मैं ए स्क्वायर को अपने माइंड में थोड़ी देर के लिए एक्स की तरह, एक्स नहीं बिकॉज एक्स यहाँ पे यूज हो रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज, इसको हम ले लेते हैं अभी के लिए जेड. तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? जेड स्क्वायर माइनस 23 जेड प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0. इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस. सो अगर बच्चे आपके पास ए रेज टू पावर 4 एंड ए स्क्वायर दो यही टर्म आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए स्क्वायर. सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम दिस वन, so z is either 18 or 5. Z means a square. So a square is either 18 or a square is 5. And now you are dealing in hyperbola. This is the most important step in this question, and there is a single question in the NCERT with this one. In hyperbola, we know that C. Okay, मैं दोनों cases में एक बार बता देती हूँ. Oh, let's just draw this one. These are the vertices, the red one. These are the vertices. This distance is A. Distance is A. Green are the focus. And from center to focus, the distance is C. That means C is greater than A. So C square will also be greater than A square. एक नंबर अगर दूसरे नंबर से बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर भी उससे बड़ा आएगा. डन. सो बच्चे मेरे पास सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, एक बार चेक करते हो ऊपर. सी का वैल्यू मुझे गिवन है ये इन द रेड वन. आई होप ये दिख रहा होगा आपको. सी इज अंडर रूट 10. सो सी स्क्वायर कितना आएगा? 10.
मैं एक बार 18 को रख के देखती हूँ। इज इट ट्रू? फॉल्स आ गया है। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सो रिजेक्टिंग ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 बिकॉज इसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है। ए स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन सी स्क्वायर, बट अगर ए स्क्वायर 18 बन जाता है तो सी स्क्वायर से बड़ा बन जाएगा। एंड अगर 5 के लिए चेक करें देन सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज 10, ए स्क्वायर इज 5। नाउ इट इज ट्रू। दैट मीन्स ए स्क्वायर का वैल्यू कितना सिलेक्ट होगा? ओनली 5, नॉट 18। नाउ ए स्क्वायर इज 5 एंड फ्रॉम अबव रिलेशन बी का वैल्यू कहाँ निकाला है हमने? Here we have b square. b square is 10 minus a square. b square is 10 minus a square. So b square will become 10 minus 5, that is 5. Now putting the value in general form, जो भी हमने ऊपर लिखा था, that is y square minus a square, y square upon a square minus x square upon b square is equals to 1. Putting the value of a square and b square, y square upon 5 minus x square upon 5 is equals to 1. I hope this exercise is clear to you now.